Hello students. Today we will discuss questions from entrance exams, and students, these questions are based on the topics which we have covered till now. So these questions are from packing efficiencies, then these are from interstitial voids, and some of them are from the RAD relationships. Now the first question is that A is the length of the side of cube. The distance between body centered atom and the corner atom will be. So we have to find out the distance between body centered atom and the corner atom. So students, in a cubic unit cell, so this is a cubic unit cell. If A is the edge length, so this is the edge length A. All edges are of equal length, so this is A, this is also A. Now we have to find out distance between corner atom and the body centered atom. So students, to calculate this, we first draw a body diagonal, and students, we know that the length of body diagonal means यहाँ से लेके यहाँ तक, this distance we know is A under root 3. Now students, we have to find out distance between this atom and the body centered atom, and students, this is exactly, the body centered atom is at what distance from the corner? Exactly body diagonal के आधे पे है, which means this distance is A under root 3 by 2. So students, the correct answer is A root 3 by 2. So option B is the correct answer. So the question was average question. Now we have next question. This is a direct question and was asked in AIPMT 2007. The fraction of total volume occupied by the atoms present in a simple cube. So students, the question is about packing fraction of simple cube. And student, in a simple cube, we know that packing fraction is what? Pi upon 6, which is actually 0.524, and in terms of efficiencies it is 52.4, but the options are in terms of pi, so the correct option is pi by 6. Now we have a similar question, and the question was asked in AIEEE 2006. The total volume of atoms present in FC, that is face centered unit cell, means face centered unit cell में total volume atoms कितना occupy करते हैं. So students, in a face centered unit cell, we know that we have how many atoms per unit cell? 4. So the volume occupied by 4 atom will be 4 into volume of 1 atom, that is 4 by 3 pi r cube. So this is, students, 4 into 4 is 16 by 3 pi r cube. So correct answer is option D. Now students, next question. The vacant space in body centered cubic lattice is, we have 4 options. Students, packing efficiency जो body centered cubic lattice में होता है, we know it is 68%. Now but the vacant space means free space. So how much is vacant space? Vacant space will be 100 minus 68, that is 32%. So correct option is this. Student, this is a very easy question, and this question was asked in NEET exams, NEET 2015. Again, there is a similar question. This question was asked in AIEEE, AIPMT as well as JEE 2012 exams. The question is percentage of free space in CCP and BCC lattices are respectively. Students, CCP को हम face centered cubic arrangement भी बोलते हैं, and we know that in FCC the packing efficiency is how much? 74%, which means how much space is left unoccupied? That is 26%. And in BCC, body centered cubic lattice, packing efficiency is how much? It is 68%. So how much space
is unoccupied 32. So the correct options are 26% and 32%. 26 and 32 respectively. That is option C is the correct answer. Now students, we have a question from JEE Mains 2017 exam. A metal crystallizes in face-centered cubic structure. If the H length of the cell is A, the closest approach between two atoms in a metallic crystal will be. So student, we have a face-centered cubic lattice, which means constituents are present at corners and face center. So we have constituents at all the corners and we have constituents at the face center. So we have constituents at the face centers. Now students, the question is the closest approach between the two atoms. So students, FCC unit cell में जो closest approach होगा दो atoms का, that means हमें वो distance निकालना है जो दो nearest neighbors में, first nearest neighbors के बीच में होगा. So students, in FCC unit cell, these two are the nearest neighbors. और ये कहां पर है? They are at distance half of the face diagonal. So हमें ये distance बताना है. And students, we know that face diagonal is a root 2. तो ये उसका आधा कितना होगा? A root. So this distance therefore will be a root 2 का half. And this, okay students, answers, okay ठीक है. हम इसको a 2 can be written as root 2 into root 2. Root 2 and root 2 cancel out. So we are left with a upon root 2. So the correct answer is option C. So students, the correct answer is option C. Now we have another question. Again, this question is based on packing efficiencies. Now, packing efficiency of FCC, BCC and simple cubic lattices follows the order. Students, this question was asked in KVPY exam 2016. आपको FCC, BCC और simple cubic lattices के packing efficiencies को एक order में arrange करना है, rather decreasing order में ही है. See, now FCC में packing efficiency कितना होता है? 74%, which is maximum. BCC में 68% होता है. सिंपल क्यूबिक में 52.4%. सो वो इसी ऑर्डर में होंगे. सो दैट मीन्स FCC, देन BCC एंड देन सिंपल क्यूबिक. सो वी हैव करेक्ट ऑप्शन FCC सबसे पहले. सो इट इज ऑप्शन A. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Advanced 2013. नाउ क्वेश्चन is the arrangement of X negative ions around A positive ion in a solid AX is given in the figure. If the radius of X negative ion is 250 picometer, the radius of A positive is. So students, इस क्वेश्चन में A positive के अराउंड X negative, so ये जो 6 स्फीयर्स हैं जिनको 3 को मैंने रेड मार्कर से और 3 को ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया, दो दे आर आइडेंटिकल स्फीयर्स. सो ये सभी स्फीयर्स X नेगेटिव आयंस हैं और A पॉजिटिव आयन यहां पर है, उसके अराउंड ये X नेगेटिव आयंस हैं और X नेगेटिव का रेडियस दिया और A पॉजिटिव का रेडियस निकालना है. सो स्टूडेंट्स, इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको लगेगा दैट A पॉजिटिव है कहां पर? A पॉजिटिव इन 6 स्फीयर्स के बीच में जो खाली जगह थी उसमें है. और इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड. सो स्टूडेंट्स, A पॉजिटिव आयन इज एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड. नाउ तो हम इसका रेडियस निकालेंगे कैसे? तो स्टूडेंट्स, मैं अगर ये एज्यूम करूं कि A पॉजिटिव इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में परफेक्टली फिट आता है, तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो हमें पता है दैट रेडियस ऑफ द एटम और आयन विच इज इन दिस वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ द अदर आयन विच इज फॉर्मिंग इट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कितना था? इट वाज 0.414.
Now this R is the radius of cation, so this is of A positive ion, and this is the radius of what? X negative ion. So इसमें radius of cation निकालना है आपको. So it is 0.414 times radius of anion, and radius of anion is given 250. So into 250. So approximately it is 104 picometer. So the correct answer is option A. Students, ये क्वेश्चन आप डिफिकल्ट लेवल का भी कह सकते हैं, वो तभी जब आप इस फिगर से एक्चुअली ये हिंट ना उठा पाए तो. बट अगर आपको उस फिगर को देखते ही अगर पता चल गया कि अरेंजमेंट कैसा है, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बहुत इजी बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2-dimensional स्क्वायर यूनिट सेल शोन बिलो इज. सो ये एक स्क्वायर यूनिट सेल है, आपको इस अरेंजमेंट में पैकिंग एफिशिएंसी बताना है. अगेन क्वेश्चन IIT JEE लेवल का है, 2010 में आ चुका है. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ टू सॉल्व दिस. फर्स्टली स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर का लेंथ मैं L मान लेता हूं, साइड का लेंथ. सो आपको पता है स्क्वायर में तो दोनों. सो एरिया ऑफ स्क्वायर मींस टोटल एरिया कितना होता है इस स्क्वायर का? इट इज L into L, that is L square. Now students, area occupied कितना है? How much area is occupied by these spheres? So students, आप देख सकते हो एक ये पूरा सर्कल और बाकी ये चार, लेकिन ये जो उनका हिस्सा इट इज ओनली 1/4. सो 1/4 इसका पार्ट, 1/4 इसका पार्ट, 1/4. सो इन चार का मिला के 1/4 into 4 1 बनेगा. एक ये हो गया. सो टोटल वी हैव 2 सर्कल्स और 2 स्फीयर्स. सो एरिया इज रादर सर्कल कहूंगा मैं, 2-dimensional अरेंजमेंट है. सो इट इज ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर. ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर एरिया होता है. सो area of circle is pi r square. We have 2 circles in total, so 2 pi r square. Now students, packing efficiency क्या होगा? It will be volume occupied, or sorry, area occupied upon total area. Area occupied is 2 pi r square upon we have L square. 2-dimensional में तो एरिया से ही होगा into 100. Now L का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R निकालना पड़ेगा. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट दिस बी पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C. AC ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस हो गया. सो स्टूडेंट्स, यहां ABC से इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. AB is L, it is 2L square. So your AC would be what? AC would be L root 2. Now, और सिंपली से चलो ऐसे ही कर लेते हैं. AC is L root 2. Now students, what is AC? अगर रेडियस में R मान लेता हूं तो दिस इज R R R. AC is 4R. सो यहां से हम कह सकते हैं 4R is what? L root 2. So L would be 4R upon root 2. So L स्क्वायर कितना होगा? 4R का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 R स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2, विच मीन्स 8 R स्क्वायर. सो L स्क्वायर का वैल्यू आ गया 8 R स्क्वायर. R square and R square cancel out, so we have 2 into pi. Pi is 3.14 into 100 upon 8. Students, solving this we get 78.6.
0.54. So the correct answer is option D. Now students, the next question is again is a JEE Advanced Mains as well as advanced level questions. Now in this question, see, a BCC lattice is made up of hollow spheres of B, which means आपका जो body centered cubic lattice है, it has hollow spheres B present at all the corners and the body centered. Spheres of solid A are present in hollow spheres of B. So, इन्हीं के अंदर A के spheres भी present है in this arrangement. The ratio of total volume of sphere. Now, students, since this is a cubic unit cell, so the ratio of total volume of spheres of B unoccupied. So unoccupied means total में से occupied ये हो गया. So unoccupied होगा इतना. ऐसा ही सभी spheres में होगा. So ये हमें निकालना है by A in a unit cell and the volume of unit cell. And assuming that AB, the H length, volume of unit cell कितना होगा A cube. So हमें ratio निकालना है volume of spheres of B and to that volume of the unit cell. So volume of unit cell is A. Now students, BCC में A क्या होता है? If you remember, R is A root 3 by 4 है. So A होता है आपका 4R upon under root 3. So इसका क्यूब करेंगे, so 4R upon root 3 का क्यूब, which means ये 4 का क्यूब हो गया 64 R cube and this would be 3 under root 3. So this is volume in terms of radius. Now volume, so हमारे पास total volume of unit cell तो आ गया. अब volume of spheres of B unoccupied by A ये निकालना है. So students, volume of spheres of B unoccupied by A ये कितना होगा? So students, ध्यान से देखना. आपको पता है BCC में total atoms per unit cell कितने होते हैं? 2. So volume होगा twice of 4 by 3. ये total volume है B का, लेकिन उसमें से कुछ वॉल्यूम A ने ऑक्यूपाई भी कर लिया है, इतना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, बट A का रेडियस B के रेडियस से आधा है. सो इट विल बी ट्वाइस, बिकॉज आइटम्स तो A के भी 2 ही होंगे, 4 by 3 पाई R की जगह R by 2 क्यूब होगा. सो वी सॉल्व दिस, so it will be 8 by 3 pi r cube minus 8 by 3 pi r cube and 2 का क्यूब कितना 1 by 8. So 8 by 3 तो कॉमन है, 8 by 3 pi r cube, this is 1 minus 1 by 8. So student, we get 8 by 3 pi r cube, 8 minus 1, 7 by 8. So students, this is volume which is unoccupied. Now the question is, हमें क्या करना है? total volume of जो spheres है of B का जो unoccupied है divided by total volume of the unit cell. So now we'll ratio. So finally we need to calculate 8 by 3 pi r cube
into 7 by 8 upon total volume of the cube, which is 64 r cube upon 3 root 3. This 8 and 8 cancel out. R cube and R cube cancel out. 3 and 3 cancel out. So we are left with 7 into pi, ये ऊपर गया under root 3 upon 64. Now student, question was find the value. अच्छा, ये given था a into pi under root 3 by 64. So आपको a का वैल्यू निकालना था. Find the value of a. Now students, अगर आप इस रिजल्ट को इससे कंपेयर करो तो ये तो कॉमन हो गया. So ये 7, इसका मतलब this implies a is equal to 7. So this is the integer type question. So the answer should be integral, and that integer we have determined is 7. So students, this is it for the day. Now in the next lecture I will discuss radius ratio rules of ionic solids. Thank you students.